Now we are entering the last topic, which is vector product. Last one is vector product. खत्म हो जाएगा, vectors पूरा done हो जाएगा, vector product. Okay. So vector product क्या है? What is vector product? That A cross B represent vector product as A. Suppose A vector is there, B vector is there. इसका cross, we should say cross. A cross B is nothing but vector product. And उसको suppose A cross B को का formula क्या है? What is the formula for A cross B? Mod A mod B sin theta is a formula for cross product. You understood right? Before वाला cos theta है. Cross product का formula है mod A mod B sin theta. And suppose मान लो A cross B को C vector मान लो. C vector मान लो. Okay. I told you दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करने से आंसर विल बी वेक्टर ओनली. क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर करने से क्रॉस विल गेट ए वेक्टर आंसर. वेक्टर मींस आई कैप जे कैप में आएगा आंसर. ओके. नाउ सी वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड, इज ए मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन आल्सो. दिस एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. और डायरेक्शन के लिए वी आर पुटिंग दिस एन कैप. सो फॉर्मूला क्या है? ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप. एंड जो रिजल्टेंट सी वेक्टर आया ना, दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आल्सो. द आंसर जो भी आया ना, दैट वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. दैट इज आंसर. सो ए की फॉर्मूला सपोज फॉर्मूला क्या है? टेल मी. ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला इज मॉड ए मॉड बी sin theta is a formula, and we have to represent n cap. n cap क्या है? It is a unit vector perpendicular to both A and B. The unit vector जो भी है वो perpendicular to both A and B. Suppose A vector is there, B vector is there, A vector is there, B vector is there, angle is theta. Angle is theta. Now n cap का direction बोल सकते हो. Which direction the n cap will be there? N cap direction. It is definitely, see, this A and B are in xy plane. This is x axis, this is y axis. A and B are in xy plane. It'll go up. That n vector should be perpendicular to the plane. Okay, either z axis, positive z axis, or negative z axis. Perpendicular to the plane मालूम है ना? Perpendicular to plane means it is the n vector should be perpendicular to the plane or inside to the plane. ऐसा रहेगा. So उसके लिए we have to use right hand thumb rule. Right hand thumb rule. So क्या है? A cross B. You put the four fingers at A and curl the fingers from A to B. The thumb indicates the direction of A cross B ka direction, that is n cap ka direction. Okay, so it is towards the z axis. Now B cross A means you put the four fingers at B and we have to go for B cross A. B to A we have to go. So curl the fingers from B to A. The thumb indicates the direction of n cap. N How cap do you is which way to like do that? thumb indicates the direction of n cap direction. So first I want A cross B. First is A, right? So A direction you put four fingers. Four fingers you have, right? Four fingers you have to put at the A direction. A से B. A से curl to B. And thumb indicates the direction of n cap. Okay. Now if you want B cross A means the four fingers you have to place at B first. So four fingers B first direction and B to A we have to go. B to A. And thumb indicate direction of n cap. That is given by, what is that rule called? Right hand thumb rule. Write down. Right hand thumb rule. This one you can use easily. Thumb rule. Or we can call screw rule also. Or we can use right hand screw rule. Right hand screw rule.
like a screw, you know how to take the screw. If when you're taking the screw, it is coming upwards. When you're turning the clockwise, screw is going downwards. So we have to put a screw here at the two end points, common point you're putting, and we have to rotate from A to B. See, I'm rotating from A to B. It is the screw is coming outwards. Outward is the direction of n cap. If I rotate from B to A, so B say A, if I rotate, the screw is going into the plane n cap. So either you can use right hand screw rule or right hand thumb rule, but better to use right hand thumb rule easy. Any one rule we can use to get the direction of n cap. So first formula you got, that is a mod b sin theta into n cap. N cap is nothing but unit vector which is perpendicular to both A and B. That is the answer. Very important. इसमें इसमें क्वेश्चंस रहेगा आपको, एक ये समझ में नहीं आए तो कॉन्सेप्ट पूरा निकल जाएगा. डायरेक्टली दे विल नॉट गो, दिस कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस दे विल आस्क. ओके चलो, डायरेक्शन इज राइट हैंड थंब रूल or screw rule. Next, now to find unit vector, unit normal vector n cap. How to find n cap? From the formula में से n cap is, see, a cross b का formula is a cross b. Formula is mod a mod b sin theta into n cap. From this, what is n cap is equal to a vector cross b vector by mod a mod b sin theta, right? I can write like this: a cross b by, instead of writing ab sin theta, I can write mod a cross b. Why? What is the mod a cross b ka magnitude ka? A cross b is nothing but ab sin theta only. So this is a formula. So what is the formula? A cross b by mod a cross b is a formula for n cap. They will tell to find the n cap. So how to find a cross b vagara we will see. But try to understand little bit theoretical things you have to understand here. So first one we learned mod a mod b sin theta is the formula for a cross b and n cap lagane ka. And how to find n cap also we found the value a cross b by mod a cross b. Okay, this is the formula we learned. Next, special cases learn karenge. Tell me when theta is 0 degrees. Tell me what is the answer when theta is 0 degrees. What will be the value of a cross b? A cross b ka? A cross b is mod a mod b sin 0, right? Sin 0 is 0. So it is 0. Okay. Next. Theta is 180. How much? 0. Sin 180 is also 0. So a cross b is 0. Next. If its theta is 90 degrees. Oh, A mod A mod B. So it is simply mod a mod b. Sin 90 is 1, right? So this is a maximum value. Maximum value. So here cross product is 0 for parallel or anti-parallel vectors. Okay. Dot product will be 0 when it is perpendicular vectors. Dot product is 0 when perpendicular. Very important. Okay. Now we will see conditions for parallel vectors and two vectors. See, suppose they given parallel vectors directly. So shortcut is there to find. One is what? Either cross product is 0 we can put. Second method we can use, their components are proportional. This method is useful for solving the question. Suppose मान लो A vector is given A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. This is in Cartesian form. Similarly, B vector is given B1 vector, B2 J cap, B3 K cap. Okay, I, J, K, you know, right? Orthogonal unit vectors. Okay.
Now suppose they told they are parallel vectors, and they'll not give some a3 value, they'll tell to find what is that a3 value. So always we cannot go a cross b equal 0, lengthy method. So shortcut is there. Whenever they given parallel, what is shortcut? Simply a1 by b1, a2 by b2, a3 by b3. This condition if you use and you can solve, will get any one value. Okay, this is only for parallel vector. Parallel vector components are proportional, right? Components are proportional. क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, समझ में आएगा. दोनों a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3 करके we can solve. आपको ये भूल जाएगा पीपल, ये भूल के what they will do, parallel means cross product is 0 बोल के cross product करना शुरू कर देगा in Cartesian form में, थोड़ा lengthy method हो जाएगा. Okay, we have to go for always proportional. चलो done. Next short form लिखो. Done. Next properties of vector product. क्या क्या properties है? Whether they obey commutative law, whether they Yes. obey huh? Yes. No. Answer is no. Why? You tell me. It is we call this not a commutative property. Why? Why? Because देखो, I told you same thing. Here a vector is there, b vector is there. Okay. Now tell me direction. See, a cross b Direction means is inside and outside. outside. Direction change हुआ तो vector is changing. So a cross b is not equal to b cross a. A cross b is outwards. B cross a is inwards. Direction is changing. That's why they are not equal. But a cross b is equal to minus of b cross a. This is true. A cross b is equal to minus b cross a. एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. So cross product does not obey commutative property. It is always anti-commutative property. Now second property. Yes, sir. Sir, minus of whole b cross a. B cross A. Then only it will be equal. नहीं तो नहीं आएगा. Okay. Next property. The vector product is distributive. मतलब देखो a cross b plus c means a cross b plus a cross a. This is satisfied distribute करेगा. Simply short form लिखो, the vector product is distributive, and write this one, a cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c. And third one, sometimes they ask angle, and what is sin theta from this? You know already. What is sin theta? A cross b by mod a mod b, and sin, if you send this side, it becomes sin inverse. In cross product mein angle, you can find this one. So generally, when they say angle, always first go for dot product. Dot product ka always go. Don't go for cross product angle ka. Okay.
डन, चलो नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आई टोल्ड यू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मींस आई कैप जे कैप के कैप, ऑर्थोगोनल उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आई क्रॉस आई, Can you जे go back? क्रॉस Like, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के का यूनिट वेक्टर। टेल मी अनेक बोलो, आई क्रॉस आई विल बी हाउ मच? 1 ओके, व्हाई आई क्रॉस आई इज 1? because same angle 180 degrees. हाँ सेम है तो 180। हाँ Like I cross I नो, थिंक नाइसली, आई क्रॉस आई एंगल इज हाउ मच? 0 हाँ 0 डिग्रीज इज व्हेन, व्हाट इज द फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला? टेल मी। cos theta. So cos cos 1 theta, like क्रॉस प्रोडक्ट इज sin theta। yeah sin theta. sin 0 is how much? 0 So I cross I is 0 okay. very careful, understand precise में। you can copy last बाद में, vector videos are there, you can check। vector product of orthogonal unit vectors का, orthogonal means, see when I start you start writing, orthogonal unit vectors means nothing but x direction में I cap लेने का, y direction में j cap, z direction में k cap। now इसका cross product is I cross j is k cap, j cross k is I cap and k cross I is j cap। tell me why? I क्रॉस जे, देखो I से J डायरेक्शन जा रहे हैं, राइट? सो I से J डायरेक्शन जा रहे हैं। सी आई विल टेल यू वन, I क्रॉस J इज इक्वल टू, वी वांट टू फाइंड, सो व्हाट इज A क्रॉस B का फॉर्मूला? मॉड A मॉड B sin थीटा। थीटा इज हाउ मच? I एंड J का एंगल इज 90 into n cap। n cap का डायरेक्शन टेल मी, n cap का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर along the perpendicular to both A and B। tell me n cap का डायरेक्शन, I cross J, put the four fingers at I, curl the fingers to the J, I cross J, thumb indicates the direction of k cap, k cap will be the n cap direction। now sin 90 is 1, what is mod I? 1, mod J is 1, so therefore I cross J vector is k cap। okay, so to understand this one, आपको क्या करने का, शॉर्टकट यू हैव टू लर्न। सो आई जे के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। व्हेन यू आर गोइंग क्लॉकवाइज सीरियल ऑर्डर में, यू हैव टू यूज दिस। देखो आई, दिस विल बी प्लस, राइट? आई क्रॉस जे विल बी प्लस के, आई क्रॉस जे विल बी प्लस के क्रॉस आई इज जे and j cross I k is I। so when you're going serial order mein, the if you multiply, if you do cross product of this one, you will get the other one, okay? but when you go in reverse order, suppose I cross k, then you should take minus j cap। when you're going reverse order like this you put minus। so yeah, tell me I k cross j, how much? k cross j, I'm going ulta, like this I'm going anti-clockwise, minus I so cap. minus I cap we should put, okay? and next one will be if they are in the, this one I told you, okay? now same direction wala, I cross I, j cross j, k cross k will be 0, I cross I cap, j cross j cap, k cross k cap will be, both are in same direction, angle is 0, sin 0 is 0, so answer is 0। so very important, ये multiplication कैसे करने का I will tell you। we have a matrix method, determinant method to solve the A cross B, वही method follow करने का in all the cases में। okay, चलो done, right? now cross product of two vectors in Cartesian form। Cartesian form means I told you I cap, j cap, k cap terms में Cartesian form। suppose मान लो you have ax I cap, ay j cap, az k cap, and b vector you have bx I cap, by j cap, bz j cap। I want to do a cross b, we cannot multiply directly like I cross I cross j, एक एक करने बहुत difficult हो जाएगा। so उसके लिए we have a matrix formation determinant method, we call it determinant method, okay? so क्या है, tell me,
सिंपली आपको मेथड लर्न करो. व्हेन वी डू क्वेश्चंस वी विल अंडरस्टैंड केयरफुली. सो फर्स्ट यू व्हेनेवर यू मल्टीप्लाइंग एनी कार्टेशियन फॉर्म, फर्स्ट you put I cap, J cap, K cap like this always. Understand, very important. ये आगे तो all questions will be done. So first we will do, whenever you are multiplying any two Cartesian vectors cross product, first you do I cap, J cap, K cap. And I का coefficient you write down. What is I का coefficient is AX. What is J का coefficient is AY. And what is K का coefficient is AZ. Similarly, B vector का I का coefficient is BX. And J का BY. And K का BZ. So now you have to hide and do, no? Now before that you have to put the symbol plus minus plus. Very important. ये प्लस माइनस प्लस क्यों करेगा बोल का आपको मैट्रिक्स जब चैप्टर आएगा आपको समझ में आएगा. बट दिस इज शॉर्टकट, यू टू अंडरस्टैंड. ऑलवेज व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट आई जे के लगा के यू हैव टू पुट द थिंग. नाउ कैसे करने का? फर्स्ट प्लस आई कैप, राइट? प्लस आई कैप इनटू उसका सी आई कैप का कॉलम, आई कैप का रो खत्म कर लो, क्लोज कर दो. आई कैप का कॉलम, आई कैप का रो क्लोज करो. देन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या आएगा? ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड. डन. फर्स्ट वन आई कैप लगा के उसका कॉलम उसका रो क्लोज कर दो. रिमेनिंग नंबर्स डायगोनली मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट. देखो ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड. फर्स्ट वन डन. नेक्स्ट लेटर वी शुड टेक एज माइनस जे कैप. This one done, right? Next step is minus j cap into reason. Now j cap का कॉलम, j cap का रो क्लोज कर दो, बंद कर दो. रिमेनिंग लेटर्स का डायगोनली मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट. ax into bz माइनस bx into az. खत्म. ax into bz माइनस bx into az. डन. नेक्स्ट जे का भी हो गया. नाउ वी हैव टू गो फॉर के कैप का. सो प्लस के इज राइट, प्लस के कैप. नाउ क्या करने का? के कैप का कॉलम, के कैप का रो क्लोज कर दो. रिमेनिंग क्या है? ax इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई. ax इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई. दिस इज अ मेथड यू हैव टू फॉलो. नंबर्स में इजी हो जाएगा, नंबर्स में इजी हो जाएगा. So A cross B, if you done like this, you will get the answer. Okay. Now करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा. देख एक का अनशुड राइट, कॉपी राइट वाला A क्रॉस B का. चलो now करो. लिसन रेहान, देखो A vector is given as 2i cap plus 3j cap plus k cap. B vector is given as I cap minus 2j cap plus 4k cap. A cross B चाहिए. Okay. A vector क्रॉस बी वेक्टर चाहिए. आई टोल्ड यू हाउ टू मेथड. देखो फर्स्ट यू हैव टू पुट दिस मैट्रिक्स फॉर्म. फर्स्ट क्या करेंगे? दिस आर इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म मींस आई जे के रहेगा. ओके. नाउ फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? आई जे के वेक्टर. ओके. देन क्या करेंगे? आई का कोएफिशिएंट यू पुट ए का पूरा. आई का कोएफिशिएंट इज 2, जे का इज 3 एंड के का कोएफिशिएंट इज 1. सिमिलरली बी वेक्टर का I का कोएफिशिएंट इज 1, B का -2 एंड 4. एंड क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस. नाउ हाउ टू डू? फर्स्ट प्लस आई वेक्टर इनटू उसका कॉलम उसका रो क्लोज कर दो. सो 3 into 4 is 12 minus -2 into 1 is -2. डन. आई का डन. नेक्स्ट लेटर इज माइनस जे, राइट? माइनस जे इंटू नाउ उसका कॉलम उसका रो क्लोज कर देने का. जे का कॉलम जे का रो क्लोज करो. डायगोनली मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट. 2 into 4 is 8 माइनस 1 into 1 is 1. डन. जे का भी डन. नाउ थर्ड लेटर इज प्लस के इंटू उसका कॉलम उसका रो क्लोज कर देंगे. सो के का कॉलम के का रो क्लोज कर दो. So k diagonal multiply. 2 into -2 is -4 minus 3 into 1 is 3. So therefore answer is 12 plus 2 is 14 I cap
minus 7 j cap minus 7 k cap. This is answer. So A cross B का आंसर is this much. मिडल सेम आई जे के लगा के प्लस माइनस प्लस लगा के कॉल उसका कॉलम उसका रो क्लोज करके डायगोनली सब्ट्रैक्ट. चलो नेक्स्ट ये करो, देखते हैं. व्हेन यू आर डूइंग आई का कॉलम पूरा एंड आई का रो पूरा क्लोज कर दो, डायगोनली सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट. दे आर इन कार्टेशियन फॉर्म. ही इज आस्किंग ए क्रॉस बी, दैट ओनली वी आर स्टडीइंग टुडे, वेक्टर प्रोडक्ट. So I j k, I का कोफिशिएंट इज 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस प्लस. ना करो. Should we take common? कॉमन नहीं है, कुछ नहीं आंसर. Minus Because 3 plus 6 j cap minus 3 k cap. हाँ करेक्ट. सो प्लस आई इंटू उसका कॉलम उसका रो क्लोज. सो 12 माइनस 15, सो माइनस 3 माइनस जे इंटू उसका कॉलम उसका रो क्लोज. सो 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस के इंटू उसका कॉलम उसका रो क्लोज कर रो 5 माइनस 8, सो माइनस 3. सो इट इज माइनस 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप minus 3k cap. This is answer. Simple. We have to do the cross product like this. So vector product का formula we learned mod A, mod B, sin theta in n cap, and that n cap का direction will be perpendicular to both A and B, and the direction is given by right hand thumb rule. वो learn कर लो always. Next. चलो करो. Two vectors, A vector is given, B vector is given, are parallel to each other. They only told parallel. He is telling to find lambda. Here lambda is there, that lambda symbol is telling to find. 2. Why? Because they're like parallel, so it'll be multiples. Parallel means Multiples. multiple. No wrong. What? Better you're following something. I told you when the two vectors are in parallel, what is the answer? Tell me how to do. Their components are equal. Yeah. Always do the components. Components means a1 by b1. मतलब 2 by minus 4 is equal to 3 by minus 6 is equal to minus 1 by minus lambda. So you can take minus cancel. Cross multiply करो 3 1 3 2 6. Lambda equal to Yeah. minus 2. Minus 2. Minus 2 is answer. Okay. So very important. आपको they are parallel means always you have to go for the thing. Minus 2 or plus 2. Minus 1 by minus 1, right? 1 positive, negative, minus 2. आया? Next. So now people क्या करेंगे इधर? When they are parallel, A cross B equal 0 बोल के लगाएगा. A cross B अगर मैट्रिक्स मेथड इक्वल करके बहुत टाइम लग जाएगा. So always go for shortcut formula here. Now करो same. He telling magnitude of A cross B. So normal A cross B करने के बाद we have to find the magnitude. And you know whenever they are in Cartesian form, A cross B we have to go for determinant method. I J K लगा के solve करने का. A cross B. I J K 3 1 2 2 minus 2 4 प्लस माइनस प्लस. पहले A क्रॉस B फाइंड करके आंसर आने के बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करो.
8 I cap minus 8 J cap minus 8 K cap. ओके, उसका मैग्नीट्यूड इज आस्किंग, Okay. अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करने का, प्लस आई इंटू उसका कॉलम उसका रो, 4 माइनस ऑफ माइनस 4 इज प्लस 4 माइनस जे इंटू उसका कॉलम इसका रो, 12 माइनस 4 प्लस के कैप इंटू उसका कॉलम उसका रो, सो माइनस 6 माइनस 2, सो 8 आई कैप प्लस माइनस 8 जे कैप minus 8k cap. 8 root 3. 8? Root 3. Yes, 8 root 3 is the answer. This you got as A cross B, Yeah. but he's asking magnitude of A cross B. How to find the magnitude? I told you in the Cartesian form. Mein. So whenever magnitude we are finding under root this square plus this square plus this square, 8 square plus 8 square plus 8 square. So क्या तो 8 root 3 is answer. Okay. So next. करो. In above example में I want a unit vector perpendicular to both n a and b. मतलब I want n cap. I want n cap. In the previous example में I want n cap. You know already the formula for n cap? A cross b by mod a mod b. Mod a cross mod b. And tell which option is right. A cross b value, you know, mod a mod b also, you know. Mod a cross b value also know. Substitute and tell us. Sir, A. A1. Why? A? See, A cross B how much? 8 I cap minus 8 J cap minus 8 K cap. By mod A means 8 root 3. So minus 8 common ले दो. I cap Okay, minus B. J cap B. plus, right? Plus minus or plus Yes, sir, plus 1. by 8 root 3. So minus 1 by root 3 into this one. Okay. 8 हम plus 8 I cap minus 8 plus 8 8 cap plus 8 cap minus 8 J cap plus minus 8 K cap by 8 root 3. So minus 8 अगर मैं 8 ले लो कॉमन, 8 अगर मैं लूंगा I cap minus J cap minus K cap by 8 root 3. So cancel 1 by root 3 into I minus J minus K. Okay, but unit vector should be perpendicular to both A and B, right? That unit vector can be positive also, negative also. Okay, it should be condition क्या है? It should be perpendicular to both A and B. मतलब it is in X and Y plane में Z axis है, इधर आएगा इधर आएगा. So both A and B is answer. Okay, it's not like always positive value negative value नहीं है. आपको unit vector पूछा है ना, that's why both is answer. Plus or minus दोनों आएगा. चलो करो. The angle between two vectors A and B is theta. The triple product A dot B cross A is how much? Think करके बोलो. I told two vectors are there, A vector, B vector. Angle between them is theta. He is asking what is the value of A dot B cross A. So it is mixing of dot product and cross product. It is mixing of dot product and cross product.
आंसर है बोलो, मतलब इसी को आई टोल्ड थ्योरेटिकल, देखो, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, टेल मी विच डायरेक्शन विल बी देयर? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इज, टेल मी विच डायरेक्शन? If the right hand Inside. thumb rule, Inside. into the Inside. page, that Yeah. is perpendicular to both A and B or not? Yes. मतलब इसका एंगल ए से परपेंडिकुलर है ना, Yeah. तो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी हाउ मच? डॉट प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी ए डॉट 1. बी का फॉर्मूला व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, डॉट Like प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, yeah. हाउ So मच? 0. जीरो, Yeah. जीरो इज आंसर. Oh yeah. Cool. सो Okay. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होने का, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इज इनटू द पेज, दैट यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. मतलब इफ आई सपोज मान लो आई कॉल दिस वेक्टर एज सी वेक्टर, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए? is 90. So mod A, mod B, cos theta, cos 90, cos 90 is 0. This answer. So think करके करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बी क्रॉस ए क्रॉस बी करो बोल के नहीं आएगा. ओके चलो इसका करो. क्वेश्चन देखता हूँ. मॉड ए माइनस बी मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड. So now mixing together a dot b and a cross b. So a dot b is equal to a cross b means magnitude. That's why when you are putting magnitude, there is no n cap. So a dot b का फॉर्मूला क्या है? Mod a Mod B sin mod b theta. cos theta dot product Cos theta. Cos theta. is equal to magnitude of a cross b is Mod mod A a mod B sin theta. mod b sin theta. So mod a mod b cancel. Sin theta tan theta is equal to 1. Theta is 40. These are JEE mains questions. These are JEE mains questions. Okay. Now 40 is आ गया. Now he's telling magnitude subtraction of vectors. मतलब resultant is asking. So what is the formula for magnitude of a minus b? Root of A. Root of a square plus b square minus 2AB 2ab cos theta. cos theta cos 45. No करो. Cos 45 is 1 by root 2. So answer is under root a square plus b square minus root 2 ab. This is answer. Options में they given this. These are JEE mains questions. चलो करो. So theta is 45. Why? Because they given this condition. This condition may we then solved and we got the answer that we use in the subtraction of vectors. We already done subtraction of vectors before, right? Chalo. Next question. A cross B is equal to B cross A. In that case, what is the angle between them? In this case, what is the answer? JEE means 2004. Sir, are there two answers? Two answers. 0 and 1? 0 and 1. Yeah. Angles. Wrong. Okay. Like 0 degrees and 90 degrees. No, wrong. The given A cross B vector is equal to B cross A. Okay.
I am bringing this to this side. A cross B. I am bringing this to this side minus B cross A is equal to 0. Okay. You know already A cross B is equal to minus of B cross A. This one you know, right? We know we commutative property satisfy नहीं होगा बोल के बोला ना. Minus B cross A. So minus B cross A के जगह में A cross B can write. So A cross B minus of minus plus हो जाएगा plus A cross B equal 0. So A cross B plus A cross B means 2 times of A cross B is equal to 0. What is A cross B का formula? Mod A mod B sin theta is equal to 0. So this will be gone. Sin theta is 0. Theta will be 0 degrees or pi. Pi is 180 degrees. So both answer is right. तो थोड़ा एक्सटेंड करने का, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बोले तो दैट्स व्हाई जेईई मेंस को पीपल को लिटिल बिट डिफिकल्ट क्यों लगेगा, बिकॉज थोड़ा एक्सटेंशन दिस ऑल मॉड्यूल्स नीटली करो आ जाएगा. आई विल पुट ऑल पीवाईक्यूज इन द वेक्टर्स का पूरा रखूंगा नेक्स्ट क्लास. दैट ऑल होमवर्क आप पूरा अच्छे से करो, ऑल पीवाईक्यूज, देन आई विल टेक टेस्ट ऑन द थिंग्स. ओके हाँ करो. So hard questions I am giving. P vector is given, Q vector is given, then unit vector in the direction of P cross Q. You're asking unit vector in this direction, the value of x is how much? This is nothing but 1 by x into root 3 I cap plus j cap minus 2 root 3 k cap. In that condition, mein, what is the value of x? So unit vector का फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q का फॉर्मूला क्या है? p क्रॉस q by mod p cross q. So मतलब by this two unit vectors का first you find cross product and magnitude divide. You will get in this format. Comparison में will So get we x. don't have to do that box method. हाँ box का करना पड़ेगा, नहीं तो Yeah, what is the that's shortcut okay. you have? Tell me. हाँ p cross q का करना पड़ेगा. That is called Yeah, determinant. I j k का दिया है. This one now cross multiply. So कितना होगा? I into उसका कॉलम उसका रो. So root 3 2.5 root Sir, 3 x equal to minus 2 2. root 3. X equal to 2. no wrong. P cross Q कितना है? 0.5 root 3 I cap minus 0.5 j cap minus और root 3. 0.5 क्यों 1/2 लगा सकते हैं ना? Yeah, 1 by 2 j Again get cap to उसका. minus root 3 k cap. Now mod P cross Q solve किया तो 2 you'll get.
Yeah, root 4 2. 4 इज आंसर. Oh, सो सिंपल क्या कर लेंगे आपको, -j इंटू 7.5 -8, बाद में +k इंटू उसका कॉलम उसका रो, सो 3√3 -4√3. So it is I into 0.5 is 1/2 √3 by 2 minus j into 0.5 is 1/2 plus k into 1. 3√3 minus is minus k, right? -1. So इसका magnitude find करो, then divide करो and compare with this, you'll get x value is 4. Okay? So next. Okay, now we have two formulas. हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, chapter done. Two formulas are there. Area of a parallelogram in vector form में, in cross product form में, area of a parallelogram is कितना? Anything you know? What is the formula for a parallelogram? A cross base B. into height. No, A cross B is a formula for area of a parallelogram. Mod A cross B लिखो. Mod A cross B is a formula for area of parallelogram. Okay. In terms of diagonals में, the formula will be half times D1 cross D2 vector. Diagonal D1 D2 are diagonals. This is the area of a parallelogram. And area of a triangle formula is आपको simply half time mod A cross B. These are two formulas we have to learn. Three formulas. Parallelogram का दो, half D1 cross D2, and इधर क्या होगा, half A cross B is a formula for area of triangle. मतलब when they were given the cross product, आपको cross product करके divide by 2 magnitude find करके divide by 2 करने का to get the triangle. And cross product is nothing but only determinant method. ये करो. Calculate the area of a triangle determined by two factors. Area of a triangle चाहिए. We know area of a triangle is half mod A cross B. हाँ. मतलब A cross B का you have to go for determinant method, by 2 करो, आ जाएगा आंसर. Sir, if you do determinant method, we should take k as 0, no? 0. हाँ. So A cross B का vector is mod I J K. A is 3 4 and 0, K इसमें -3 7 0 plus minus plus, so plus I into 0 minus 0 0 minus J into column 0 minus 0 0 plus K cross 7 21 minus of minus plus 12. 33 k cap by 2. 33 K cap. No, 33 K cap, right? Magnitude कितना होगा उसका? Magnitude will be Root 33. A square, right? Root Yeah. 33 whole square is 33 only. Okay. A cross B. Now what is the area of triangle is? Half times of mod A cross B is nothing but 33. 33. 33 by 2. 33 by 2 is the answer. So cross product पूरा done हो गया, खत्म. So by this vector complete chapter successfully done.